Hi viewers, this is Nisma Ameer with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Mian Nabeel Ashraf, CEO of Falcon. Hello and welcome to our show. It's a pleasure कि आपने हमारे लिए time निकाला. Pleasure is all mine and thank you for visiting my office. Sure. To start off, I would want कि आप हमें बताएं कि आपकी जो professional journey है, उसने कहाँ से शुरुआत ली? How did things start for you? I got inspired to be a pilot from one of my distant uncle. He was in the Air Force. My entire family, starting from my grandfather और मेरे वालिद साहब और मेरे चाचा सब engineer हैं by profession. So इतने engineers घर में और family में देखने के बाद I was totally bored with that. Okay. But he inspired me because he was in uniform, he was in Air Force. So he inspired me to start looking into aviation and flying. Okay. And then for some period of time, my father was posted near Sargodha. So I used to visit them on the base, Sargodha base, met pilots in the Air Force and saw the airplanes. Obviously that triggered my inspiration, interest. And then I pursued this career. Okay. And Alhamdulillah, I'm very happy that I did. Yeah. From day one, from a high school, I knew I'm going to be a pilot. Acha. So, and to my astonishment, my mother support. Normally, mothers don't support. They feel it's a very dangerous profession. They feel it's risky, huh? My father never wanted me. He still wanted me to be an engineer. He studied in Stanford, USA. It's a very prestigious university. Definitely. He wanted me to go there. सही. But I said नहीं, मैंने pilot बनना है. And my mother supported me throughout. सही. जब आपने सोच लिया कि मैंने ये करना है, उसके बाद क्या challenges face किए, especially जब आप कहते हैं training wise या education wise, what was that like? पाकिस्तान में aviation एक बहुत expensive field है. किसी हिसाब से भी अगर आप उसको लें, flying बहुत limited लोग कर पाते हैं. Very right. I was very lucky that I got selected into Air Force PF College Sargodha, where thousands and thousands youngsters from all over Pakistan apply, and then only about 50 of those are selected. To be a pilot, you need to be a specialist in all area. You know, आपकी physical fitness से लेकर आपकी mental IQ, because you are doing multiple things at any given time. Yeah. So to be a pilot, you have to have very high IQ, very good medical fitness. Okay. And obviously skills. Flying is a skill. Definitely. Challenges हर field में होते हैं. आप doctor, engineer, lawyer बने. I think कि अगर आपका इश्क अपने उससे सच्चा है तो ये तमाम challenges life में बहुत छोटे लगते हैं. तो अभी आप क्या देखते हैं कि अगर for example in this day and age a young individual decides to pursue flying or aviation, तो क्या उसके लिए आपसे comparatively अब आसानी है या अभी चीज़ें उसी तरह हैं, और आपके ख्याल से क्या ऐसे measures होने चाहिए जिससे ये एक ज़्यादा mainstream career option बने? Our times were very difficult, very depressive times. Very few people could make it. अब बहुत बेहतरी आ चुकी है. आप देखें कितनी airlines आ गई हैं पाकिस्तान में. बिल्कुल. Still, I think जो पाकिस्तान में potential है airline industry का भी fully tap नहीं है. It's iota of that. Institutions बहुत बेहतर हैं. Aircraft ट्रेनिंग के लिए बहुत बेहतर आ गए हैं. सही. So I feel कि आज बहुत बेहतर opportunities भी हैं और availability of schools and professional schools हैं, और plus universities में भी अब इस subject को bachelors and masters में लिया जा रहा है. जी. So I think opportunities are
better now than those days. So when we talk about you, आप basically 360-degree expert हैं in aviation industry, be it it's flying, it's training, it's designing, launching, supplying. पहले तो मैं चाहूँगी आप अपने अल्फाज में बताएं कि आपने कहाँ जो है expertise जो है आपकी है in aviation industry. I got those opportunities where I could get the knowledge, get an experience in these diversified areas. Airline या aviation भी एक canvas की तरह है. बिल्कुल. And it has so much to offer. Definitely. It has so much to do in it. Flying is not the only thing. Definitely. In it. Of course, that is the main driving profession in it. Yeah, that's what people जो masses know of it as. Like आप aviation बोलें तो वो बस एक pilot से association आती है. नहीं, देखें पायलट को एक एयरक्राफ्ट और एक मिशन तैयार करके देती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है. बिल्कुल. इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस जहाज को हर हालत में एयरवर्दी रखते हैं. एयरलाइन की मैनेजमेंट उसको उसका प्लान तैयार करती है, उसको वो रूट्स जो हैं हमारे फ्लाई करने हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कमर्शियल टीम होती है जो कि उसको एनेबल करती है कि वो फ्लाई करे ऑन अ सर्टेन राउट. सो इट्स अ बिग टीम, आई वुड से स्पेशलिस्ट जो behind the scene या बैक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं to make it happen. अच्छा, personally what has been your let's say favorite element, like flying या training या launching an airline, like what is that one thing जिसमें आपको लगता है आपने सबसे ज़्यादा passion feel किया? जी, to be honest, in my early period, flying. Nothing matches even now. Nothing compared to be flying. When you're flying, it's a thrill. You're flying. You're going seeing different parts of the world. Nowadays, seeing my dream coming true. Which we are going to talk about. For which I made an effort at this age of my life. बिल्कुल. अच्छा, you've also been the कह लें aviation consultant and advisor to the Saudi prince. जी. वो experience कैसा था? How did that firstly come along? Okay. And then what did you learn out of it? जो आपको लगे कि आपने eventually फिर आगे उसको apply किया हो? I was asked to design and launch FedEx. बहुत बड़ी कंपनी है. जी, बिल्कुल. दुनिया की one of the largest cargo airline है. Yeah. They came to Middle East and they wanted to launch. Wow. So उस वक्त aviation, they were already entrenched. तो उस वक्त मेरे बड़े प्यारे और अच्छे दोस्त खालिद अवान, ही इज़ दी चेयरमैन ऑफ TCS. अच्छा. उनके साथ मैंने बहुत काम किया है. वेरी इंस्पायरिंग पर्सन हिमसेल्फ, अ क्लोज फ्रेंड, अ फैमिली फ्रेंड. So we got this opportunity. So because TCS Air उस वक्त हम यहाँ ऑपरेट कर रहे थे, जो कि उस वक्त DHL की एक सब्सिडी थी. तो FedEx ने इस वक्त एक्सपर्टीज इन द एरिया थी, तो they asked us to do that for them. So while I was doing that, आपको मालूम होगा कि मिडल ईस्ट में स्पॉन्सर्स होते हैं तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के लोकल्स. जी. So FedEx क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके स्पॉन्सर भी ज़ाहिर है उसी लिहाज से प्रिंस अब्दुल अजीज उनके स्पॉन्सर हैं आज भी. अच्छा. So we met during this design and launch phase, and somehow he liked me. So he said, I would like you to come and join me and look after my airline and aviation affairs. Sahi. So he had another airline in Europe, Middle East में FedEx को था, उनकी personal fleet था. अच्छा. उनको. So I was then asked and I accepted it and moved to Riyadh. Okay. So then I stayed with them in their palace for about 4 years, 3 to 4 years. Wow. Enjoyed thoroughly. Their lifestyle, their hospitality, the culture and everything. Saudis are lovely people. They're real Saudis हैं. अल्लाह ने उनको बहुत अच्छा दिल और बहुत अच्छी सोच दी है. So I had a chance to be very close to them and live with them and spend some beautiful years of my life. सही. अच्छा, what is your take on the current landscape when we talk about the aviation industry as well as a profession? Like currently क्या देखते हैं आप? देखिए, अगर हमारी गवर्नमेंट जो कि बहुत कुछ एविएशन में भी कर रही है और सिविल एविएशन जो एग्जिस्टिंग रूल्स
हैं उनको कुछ बेहतर कर ले तो आई थिंक हम मल्टीफोल्ड इसमें तरक्की कर सकते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में। पाकिस्तान तो एक नेचुरल हब है। बिल्कुल। और व्हेन आई वाज वेरी यंग आई यूज्ड टू सी एट कराची एयरपोर्ट so many airlines from Europe used to come and then PIA used to take them to the east. I think that glory can be brought back अगर गवर्नमेंट इसको सीरियसली टेक करे। कोशिश करती है गवर्नमेंट बट लेकिन हमारी अनसर्टेनिटीज बहुत हैं, उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट एयरलाइन पे आता है। Okay, so moving on to airfalcon, which is currently a cargo airline, right? और आप उसको as a passenger airline जो है वो भी लेकर आ रहे हैं। इसका कह लें इंस्पिरेशन और आइडिया, how did this come along? On my 55th birthday, I was sitting in London where my office was, and तब क्या करना है ज़िंदगी में, सब कुछ जो एक एविएशन में हो सकता है। So I decided it's the time I should go back and give back to my country. Okay. So I packed my bag, collected all what I earned in my life, and came to my motherland back. Sahi. That was 2015. Okay. अभी जितनी एयरलाइंस इंक्लूडिंग PIA उसमें कोई इंडिविजुअल अपनी वेल्थ लेके नहीं आया। Some have sponsors abroad, like some people have sponsors from outside Pakistan. PIA is a government airline. सियालकोट की चैम्बर्स ने स्पॉन्सर किया हुआ है, उनके लोग हैं। बिल्कुल। I wanted to prove with my own money. We didn't borrow it from the banks. We didn't play it with anybody else's money. I put my own money on the stake, what I earn, my hard-earned money, because I'm so sure that we can do it in Pakistan. I wanted to be an inspiration for youngsters, as you mentioned. I was a normal a Pakistani boy, and I made it to this. I'm sure lots and lots can make it. घबराए नहीं किसी पॉइंट पे, bringing your entire life savings जो अब तक किया है? देखें, when I was born and when I became, मैं कोई क्या वो पंजाबी के जद्दी पुश्ती तो लेके नहीं आया था। I earned it. और I thought मेरे मुल्क ने मुझे ये पहचान दी बाहर जहाँ पे भी गया। I was, as I mentioned, I was fortunate. I have worked in Europe, I worked in Middle East, I worked in America. So I thought it is a curse to my own country. So I came in. I faced lots and lots of hardship in Pakistan. Doing business in Pakistan is not at all easy. This was my next question. कि challenges क्या face Huge, huge. Because setting up an airline on your own, independently, what were the challenges? Huge. I never wanted to cut any corner, so I followed the path. सही। जब आप स्ट्रेट चलने की कोशिश करते हैं तो उस पर टाइम लगता है, उसमें हार्डशिप्स आती हैं, लेकिन यू कैन ऑलवेज मेक इट। आपको मुश्किलात आती हैं बट यू अल्टीमेटली मेक इट। सो दैट्स हाउ आई मेड इट। एंड इन द मिस्ट ऑफ COVID 2020 we launched. Okay. We launched in 2020 and alhamdulillah. How was that like? Because COVID में tourism, flying, ये सब चीजें everything went down. Packs up. Actually, that I would say it just happened by chance that we planned and launched. It was not planned. It was quite delayed. Our launch was quite delayed. लेकिन बस अल्लाह ताला ने जो एक वक्त मुकर्रर किया होता है, so convention थी and we launched. And उस वक्त से onwards आपको पता है पूरी दुनिया में पैसेंजर एयरलाइंस डाउनहिल गई, कार्गो एयरलाइन अपहिल गई। बिल्कुल। बिकॉज लोग मुल्कों में, शहरों में और घरों में कर्टेल हो गए, तो एवरीबडी मूव टू ई-कॉमर्स। सो ई-कॉमर्स gave a quite a jump to the cargo airline business. Cargo airline, express courier industry and all that. So was right time at the right place. Allah had been very kind. Sahi. Welcome back to our show.
अच्छा, जब आपने ये सोचा कि आपने एक पैसेंजर एयरलाइन की तरफ जाना है, तो उसको लेकर क्या विजन थी आपके जहन में? What was the big picture that this is what I want to do and this is my vision? I launched एयरलाइन के कार्गो और पैसेंजर दोनों सेगमेंट्स होते हैं. I started with cargo because my experience, my contacts worldwide were in cargo, express cargo. So it was very easy for me to establish. सही. So my plan is to start from Karachi, Lahore, Sialkot and Faisalabad direct flights to the northern area as a complete tourist package. I want to tell people, leave your wallets home, buy a complete package, and then we'll take you all over. Oh, that's great. The most important thing, because I've spent my majority time abroad, I've seen the suffering of our expats living in Europe, in America, in Canada, in the Middle East. उनकी जो next generation है उनको पाकिस्तान का पता नहीं है. बिल्कुल. So वो भी मेरी dream है कि I would like to bring those kids back to Pakistan. So that they can explore. For tourism, and then they can reconnect to their ancestors, to their villages, to their. So वो भी एक हमारी टीम है वो develop हम लोग कर रहे हैं. सही. So we will sell those complete packages, so they can come to, we can bring them to Pakistan. अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि when you are saying that this is going to promote the tourism in our northern areas, तो वो कौन-कौन से specific areas हैं जिनको आप लोग target कर रहे हैं अभी? We are discussing with various partners in it. By when I say partners, because hospitality, hotel एक अलग segment है. फिर local sightseeing is itself. फिर activities जो northern area में skiing आ जाती है, trekking. You're going to cover that as well. We would like to give a complete package to a family. We don't want that they should go in the northern area and sit in their hotel room. We would like to take them out and about. I want to make my own niche market and then complement their services and we'll take their passengers to all these northern areas, support them. आज अगर देखें तो because of हमारे हालात और situation हम एक regional और domestic industry बन के रह गए. बिल्कुल. दुनिया सिर्फ मिडिल ईस्ट तो नहीं है. True. अच्छा, when we specifically talk about Air Falcon, तो आपके ख्याल से what is, other than the tourism aspect that you're trying to promote it as a package, what sort of consumer experience will you give your clients जो उनको बाकी airlines में शायद ना मिले? We are designing that product in such a way that it should be a unique experience for Pakistani market. Such experiences are available worldwide. It's nothing new which I'm trying to recreate. We also would like to, inshallah, if it happens, place some helicopters there where we can give a journey, a daytime, so that they can fly into the valleys. Oh, that's amazing. And see beautiful mountains Pakistan have. So, add-ons. That is one thing that needs to be tapped in. For example, if a person gets the chance to, let's say, go to Switzerland, तो वहाँ पे जब आप जाते हैं, you are able to go up to the peaks, right? और यहाँ पे होता है कि आप जाएंगे तो आप बस एक पॉइंट पे दूर से उसका व्यू लेंगे, बट आप उनको, I think वो इतनी बड़ी एक missing है aspect that we need to develop and work on, because हमारा exact वो सारा सिनेरियो उनसे कम नहीं है. But I think इसके बारे में कुछ होना चाहिए. Absolute. PI ने बड़ी एफर्ट की. PI ने एयर सफारी शुरू की, लेकिन वो फिर आगे चली नहीं. अपनी डिफिकल्टीज होती हैं उनकी. लेकिन I think it's a big market for that as well. People can go on. Imagine the influx of people who would want to go, because and then we have to make it affordable. Very important. With the economic conditions, Switzerland is just like unapproachable it's for your elite or the upper class at all. अब यहाँ पे रहते हुए अगर आप वो experience लेना चाहते हैं तो क्यों नहीं? We have, I'm sure अगर आप गए आपके चैनल तो बहुत खूबसूरत. वो तो हमारा चैनल तो उन कोनों में जा चुका है जहाँ पे लोग नहीं पहुँचे पहले. अब आप imagine करें कि वो कितनी maiden और खूबसूरत जगह है जहाँ पे access अगर पब्लिक को इन अ वेरी प्लान्ड वे दी जाए,
और वहाँ पे पोल्यूशन हो, हमारे अनफॉर्चुनेट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा लोग हम करते हैं, सो वो अगर ना हो तो वी हैव द मोस्ट spectacular mountains and the valleys where we can take them out, they can have a lunch, corporate lunches, family lunch, and lot can be done. So as I said, all this thing can be done if we can all team up, and we have an access to cheap money. Achha, when we talk about Air Falcon and especially the kind of concept that you're bringing along, कि आप एक entire package देना चाहते हैं, तो उसमें आप कह रहे हैं आपकी TG या target audience income wise, आप will it be able to cater to all sorts of people या उसमें कोई packages हैं, किस तरह से होगा वो? We can have nice luxury people whom Allah has blessed with wealth, they can come and live in luxurious hotel. People who are at middle, they can have a middle level, जो के हैं, और जो नहीं afford कर सकते, उनके लिए we can have bed and breakfast or camping. You know, so you need to just plan it. Products are available in the market. अच्छा, अभी current status क्या है when it comes to the passenger airline aspect of Air Falcon? We are not in it, as I mentioned. It's still on the drawing board because we don't want to rush it. So what do you expect? Like, when are you? Because this is such an exciting project that अभी मैं यहाँ बैठे हुए सोच रही हूँ कि this will be so interesting कि कब launch होगा. We have to finish our homework during this year current and prepare ourselves for the next. जो season शुरू होता है वो northern area का April onward शुरू हो जाता है. So in order to be ready, we have to induct aircraft. We have to induct our crews. For that training और तमाम उसके जो लाज़मात होते हैं, we will try to position them during the current year. क्योंकि ये बड़ी customer oriented industry है. So तमाम होटल्स भी जब शुरू होते हैं तो वो सॉफ्ट सीजन में शुरू करते हैं और फिर वो हाई प्रेशर लेते हैं. एयरलाइंस भी जो इस तरह के प्लान करें उनको भी इसी उसमें चलना होता है. सो वील स्टार्ट इन द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द ईयर एंड देन इंशाल्लाह. I hope everything goes as you're visioning it to be. अच्छा, मुझे बताएं कि अभी हमने briefly इस बारे में बात की है, but still when you look at the aviation or the airline industry in Pakistan, किस तरह से इसकी कह लें कंट्रीब्यूशन इन आवर इकोनॉमिक ग्रोथ वो किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन इट बिकम अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू आवर जीडीपी, लेट्स से? आप एमिरेट्स को देख लें. सही बात. आई मीन ये हम सब के लिए रोल मॉडल है कि वो रेगिस्तान में जब 80s में दुबई जाता था तो एयरपोर्ट से जब मैं निकलता था तो जो पहली चीज़ नज़र आती है क्लॉक टावर था और रेत थी. And there was nothing. Maybe 2 or 3 5-star hotels. So what they did, they first planned an air connection. That triggered the hotel industry. Sahi. That triggered the tourism. So I think कि पाकिस्तान का जो potential है वो इतना huge है कि हम बहुत मेजर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में भी, बिल्कुल, और एम्प्लॉयमेंट में भी. बिल्कुल. अच्छा, इन योर ओपिनियन, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आपके ख्याल से? सॉरी, आई एम स्टिल द स्टूडेंट. Still the student of aviation. Actually, I thought not expert. But let's say sorry to yeah, but you've spent so many years और आपने इतना exposure है आपका, you are an expert. अब आप नाम आने तो वो एक अलग बात. I still call myself a student of aviation. चलें, तो मुझे बताएं कि कौन से ऐसे crucial elements हैं which are required for a passenger airline to be successful? The quality. Quality matters. How you inspire an individual to fly with you. Then from the time you contact them till the time you reach to your destination, what is your experience? Now you compare any 2 airlines in the world. That's what make difference. The ambience, the presentation, in-flight services, at the airport, how easy it is to get in touch with them.
that matters. I think as you've summed it up, the consumer experience is king. It's very important. But why do you think that ये इतना एक basic rule है कि hospital we are a very hospitable nation, like हमारा एक we are known कि हम बड़े मेहमान नवाज हैं, सब कुछ है, but जब हम airline experience की बात करते हैं तो that does not translate in the क्या कहेंगे जो staff होता है, जो in-flight service होती है. Why do you think this thought process exists कि उस इतनी बेसिक चीज़ को वैल्यू नहीं दी जाती और वही हमारे डाउनफॉल का एक मेन कॉज बनी इवेंचुअली? I would say training. जब तक आप अपनी टीम जो कैबिन क्रू है या चेक इन क्रू है उनके अंदर ये चीज़ इनकलकेट नहीं कर देंगे कि you are the reason people are going to. अच्छा, मुझे ये बताएं कि for you when things become challenging with every project or phase of life, कभी ups होते हैं, कभी downs होते हैं, जब आप एक challenging phase से गुजर रहे हो और चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही तो अपने आप को कैसे motivated रखते हैं? How do you keep on going? सब्र. अच्छा. I think I believe everything or difficulty when it comes in your life there are only two reasons. या तो वो अल्लाह आपको टेस्ट कर रहे होते हैं उसमें और या आपने अपना होमवर्क प्रॉपर नहीं किया होता. There is something wrong somewhere. So in case you feel that I did not prepare myself well, so go back and try to work on it and make it better. So results उससे बेहतर हो जाएंगे. And let's say how does one working day in your life starts and goes on? क्या होता है आपके दिन में, किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह के लीडर हैं आप? I believe in delegation of powers. सही. I don't believe in sitting on top of everybody. We meet, we plan, and my then team execute it. Okay. If they feel any difficulty or they want to revisit any decision, they come back to me, we sit again and we try to perform it better. Sahi. I'm not a 9 to 5 person, so I don't want my team to be 9 to 5. Sahi. I'm a task-oriented person. Okay, that's great. I tell them if you finish your task in 2 hours, go home and enjoy your time with your family. There is no timer here. That's amazing. मुझे टास्क से वो है इंटरेस्ट है कि जो टास्क हैं जो गिवन स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन हो रहे हैं, काम हो रहा है, नो प्रॉब्लम. Well, I think that's a very motivating approach and more efficient usage of time. जी बिल्कुल. Spend time so with then your team. you're like a very cool boss to have. I don't know, that you have to ask my team. जी, I don't try to impose myself on सही. अच्छा, वैसे तो as you said that you delegate and obviously I think anyone who has to be successful वो people management और delegation बहुत ज़रूरी होती है. लेकिन फिर भी अगर आपके सामने कोई ऐसा यंग इंडिविजुअल है या कभी कोई मौका हो जिसमें आप हायरिंग के प्रोसीजर में इन्वॉल्व हों तो आपके लिए what are those 2-3 very important traits that a young individual must have in order to succeed in a field? 2 things. Passion and loyalty. Passion and loyalty. Okay. That makes you star. And hard work. That comes passion. जब passion है आपका तो hard work में look, I have a passion for airline. पर वो आपको तकलीफ नहीं देता वो hard work. Not at all. आप मुझे अगर कहें 2 दिन बगैर सोए आप इस दफ्तर में बैठ के काम करें, ये टास्क है, मुझे एक सेकंड के लिए भी दूसरी दफ़ा नहीं सोचना पड़ेगा. और मेरी टीम्स ने प्री लॉन्च में डे एंड नाइट बैठ के हमने काम किया है और थकन तक महसूस नहीं हुई. बिकॉज वी वर डूइंग समथिंग व्हिच वी लव फ्रॉम कोर ऑफ द हार्ट. और वो पैशन था. मेरी टीम के लोग सारे पैशनेट हैं. एंड लॉयल्टी टू जॉब, नॉट टू मी. ओके. To the task, to the job. So it's passion and loyalty. Well, I think that क्योंकि आप अगर कोई यंगस्टर्स हम यूनिवर्सिटीज़ में जब जाते हैं यंगस्टर्स को मेरी HR टीम जाती है पिकअप करते हैं. सो ये 2 चीज़ें हम देखते हैं कि क्या दे आर कमिंग फॉर जस्ट मेकिंग मनी या कंपनी का नाम दे के. नो, इफ दे हैव पैशन फॉर व्हाट एवर दे हैव बीन ग्रेजुएटेड विद एंड उसके बाद डू दे हैव दैट लॉयल्टी इन हिम.
that's the candidate I will pick up. सिखा हम सब देते हैं, देखें हमारे जो टीम के जो हेड से डिपार्टमेंट हेड होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है, वो रॉ बच्चे को या बच्चे को लेते हैं, उसको टाइम के साथ सब सीखता है. And honestly, if there is passion in a young individual, there is nothing that will stop them. Nothing will stop them for rising. Welcome back to our show. अच्छा, वैसे जब हम इन फ्लाइट स्टाफ और वो सारा बात करते हैं तो उसमें तो वी नो दैट विमेन आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बैक एंड पिक्चर, जो पीछे से ऑपरेशंस हैं, जैसे अभी आप लोग एयरलाइन पैसेंजर एयरलाइन पे काम करें, तो क्या स्कोप देखते हैं विमेन खवातीन का एज एन एम्प्लॉइज? देखें एयरलाइन इंडस्ट्री के जो बैक एंड ऑफिस में मार्केटिंग है, सेल्स है, कमर्शियल है, फाइनेंस है, एचआर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वही फील्ड्स हैं जो एक और ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होती है. ठीक है, और आई थिंक women are very good administrator. They are, some of them are very good in finance. They are very much वो nitty-gritty को देखती हैं. Commercially they have very good ideas. Inspire हम होते हैं बस young बच्चों से जो कि लेके आते हैं. So I think equally we are equal opportunity organization. That's great. I don't care कि कौन है, if these two things are part of their persona, they are our candidates. सही. And you're also very passionate about CSR. आपका एक program है, various things that you're involved in, but one of those is food for all. तो उसका थोड़ा सा बताएं. What's the thought process behind that? My father accidentally got into business of banquet halls. Okay. Acha. Quite a major part of earning of airfalcon will go into such activity. That's amazing. I believe कि बहुत सारे issues society में रोटी कमाने पे या रोटी के ना मिलने पे सही बात है. So I would try कि देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है. We should try to be a part and parcel of it. So out of that outlet, we are planning to make these mobile vehicles where there will be food. Okay. We'll deliver it to different part of Lahore. At the lunch time. And maybe they're like fixed timings हो ताकि उस इंसान को पता हो कि मेरा खाना sorted है. And we don't ask anybody. Wow, that's an amazing. So that's the inspiration behind. True. आप एक जैसे मैंने कहा कि Allah doesn't need the quantity. लेकिन वो ही just because वो जब अपनी खुसूसियात अपने बंदों में देखता है तो बहुत खुश होता है. And one of the खुसूसियत of Allah is to provide food and बिल्कुल. तो अगर आप वो कर सकते हैं एक बंदे को सिर्फ रोज. सही. हम आप 100 रुपए भी आज किसी को सुबह दे दें या किसी को भैया खाना खा लेना, तो आपकी पॉकेट पे भी कोई असर नहीं होगा और उसके लिए शायद वो 100 रुपए बचा के आज अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाएगा. So it's a very small thing. True. Good things doesn't need lot of money at all. True. It just need a motivation. Yeah. And then I think the rest follows. Absolutely. वो रास्ता खुद ही बनता चला जाता है. बिल्कुल. Absolutely. अच्छा, who has been your inspiration? Personally, professionally, किसी भी तरह से हो सकता है. Obviously, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. बिल्कुल. And then my father. Father. सही. He was a gem of a person, a friend of mine. वो उनमें जो खसूसियत थी, he was always used to extend his hand towards needy. अगर कुछ कर भी नहीं सकते फिर I think he must be very attached to you, जो वो आपको fly नहीं करना देना चाहते थे. Well, yes, parents, how they are, and they would like to see their sons and daughter what they want to. हमारे around them, safe and secure. बिल्कुल सही. That's great. And what does the future hold? Future में क्या plans चल रहे हैं? Cargo के expansion पे काम कर रहे हैं. We will add more aircraft. Okay. Will अभी जो हमारा cargo operation है वो domestic और regional है. सही. Middle East, पाकिस्तान, South Asia, इस region में हमारा operation है. We would be extending it to China. Very major route which we are working on. And then पाकिस्तान पे आपको पता है काफ़ी restrictions यूरोप से लग गई थी because of certain issues. वो इंशाल्लाह जो ही deregulate होते हैं तो then to Europe
So cargo would be in that segment. Passenger, as I mentioned, tourism, domestic as well as regional. So that is what our plans are. This itself is so huge. Yeah. और इसका इतना potential है और इतनी employment इसके अंदर आ सकती है ये जो अगर मैं अपनी ज़िंदगी में ये सब कर पाया. So I think then whosoever will come next will carry it forward. सही. Lots of technical professional questions. अब हम थोड़ी सी आपसे non-professional गुफ्तगू करना चाहेंगे जिसमें we would want to know more about you. तो मुझे बताएं कि for you, what is your idea of happiness? To help somebody. To help somebody. That brings such a happiness to you. सही, सही, सही. If you can. Definitely. और मुझे बताएं कि stress को कैसे manage करते हैं? For example, बड़े stressful days चल रहे हैं, कुछ activity ऐसी हो जिससे आप rewind करें, ease out हो जाएं. What is that? Stress is not part of my life. Really? As a Muslim, we should not even think that we should not take stress. Why should we take stress? When things do get stressful. Not at all. Wow. अगर तवक्कुल है अल्लाह पे तो स्ट्रेस किस बात? तो फिर आपका ये ट्रिक है ना तवक्कुल वाला. Absolutely. देखिए कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में है कुछ उसके आगे है ही नहीं. जो चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं उसका स्ट्रेस किस बात का? मुझे लोग कहते हो मुझे बड़ी एंजाइटी होती है. मैं किस बात की? सबसे ज्यादा हम यंगस्टर्स ये स्ट्रेस और एंजाइटी को किस बात की? जो चीज आपके कंट्रोल में है ही नहीं है उस बात की एंजाइटी उस बात की वो फिक्र किस चीज की? आई मीन आई थिंक पेरेंट्स शुड टीच टू देयर किड्स. ट्रू. आई मीन मुझे पता चलता है हम मेरे फैमिली में और जी उसको एंजाइटी होगी. मैं ये क्या होती है एंजाइटी? like you know my mom would always say they're पंजाबी ये ਤੁਹਾਡੀ नस्ल ਦਾ लफ्ज़ है स्ट्रेस. हमारी मैं तो कभी नहीं हम बोलते थे हमें स्ट्रेस हो रहा है. हाँ वो लाइफस्टाइल के चेंज होने से आप कह सकते हैं लेकिन आई थिंक वी शुड नॉट टेक. तवक्कुल है यू नो. मैंने अपना देखें अगर आपकी नीयत ठीक है आपने एफर्ट पूरी कर ली then just leave rest to Allah. It will happen if it had to happen. True. If it is not in your fate then लड़ाई किस बात की? Let it be. सही. I think I'm going to take that Absolutely. personally. Absolutely. It's for all. It's for me. I do it myself. And I tell you, no stress. Okay, so just for, let's say, leisure's sake, what is that one activity that you like to do? Workout, reading a book or watching something on television? Yes. I have a son. He's the latecomer. He's 7 years old. Oh, cute. And I love to spend my time with him. That's sweet. He takes my stress away. I'm sure. So I enjoy playing with him, talking with him, and so he's my joy. I'm sure. Sahi. As the kids are obviously they're married and they are having their own life and so the youngster is. ये सही है आपका time ले रहा होगा. Absolutely. That's nice. And what about अब मुझे लग रहा है इसका भी जवाब ना में आएगा. अगर आपको stress नहीं होता तो आपको गुस्सा भी नहीं आता होगा. क्या आता है गुस्सा? और अगर आए तो how do you manage it? गुस्सा हर शख्स को आता है. हाँ वो तो खैर human emotion है. It is part of human emotion. जिसको नहीं आता वो गलत कहते हैं. उसकी बड़ी आसान है मैनेजमेंट. जस्ट स्टेप अवे फ्रॉम द सिचुएशन बिकॉज गुस्सा इज अ कंडीशन वेयर यू विल स्टार्ट टॉकिंग मोर देन व्हाट योर ब्रेन इज गोइंग टू teach you to do. So just step away and things would be fine. It's difficult but I think if you keep that approach it'll be fine. And one, given that you have been a pilot, so ये question आपसे तो बहुत appropriate बनता है. One travel destination international that you really like. There are few. If you want, I can tell you. Nice, South France. Okay. Gorgeous. Monterey, West Coast, California. It's on Highway 1. ब्यूटीफुल. अल्लाह ने खूबसूरती वहाँ पे जिस तरह वो रोकते हैं. और मिडलैंड्स में इंग्लैंड में दिस प्लेस आई एम जस्ट फॉरगेटिंग. इट्स जस्ट नॉर्थ ऑफ ब्लैकपूल. So very unconventional choices. Peaceful places where nature is. Along with my family, whenever we have the time and opportunity, I think these are the places. And what about Pakistan? Meettheceo.
Nathia Gali. That's one of my favorites as well. We walk during my times with PF College. We used to go there. वहाँ कालाबाग base है उसका, तो वहाँ पे हम ये करते थे ट्रैकिंग वगैरह भी. उसके बाद भी अभी भी I take my kids, family kids, and we go and do trekking and मक्शपुरी है, मीरा जानी है, बड़ी खूबसूरत, आपको पता है वहाँ पे. The most beautiful I think part of Pakistan, बल्तिस्तान में नलतर. Yeah, I've heard of that. Again, haven't been though, but I've heard of it. उसमें वहाँ पे भी it's beautiful. पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है. You can't, but personal preferences होते हैं. जी, these सही. And given कि अभी family की भी बात हो रही थी, किस तरह से manage करते हैं to balance out the professional and personal life? Since I've launched a Falcon, थोड़ा सा disbalance हुआ है. उसकी price है जो कि, but then I try to compensate, take a long weekend, take them out and spend time. But it's very important कि आप देखें, आप ये सब कुछ जो करते हैं उसमें family का बहुत important हिस्सा होता है. If you don't have a supporting family, nobody can do such things, such challenging things. I confess that I have not been a very good husband or a father from that perspective in last few years, but inshallah. Chalo, you'll make it up for that. Now towards wrapping up the conversation, I would want you to tell us कि अभी तक की जो आपकी ये जर्नी रही है, प्रोफेशनल जर्नी, इससे आपने क्या सीखा? Well, simply I should be able to answer in one line. पैवस्ता रह शजर से और उम्मीदें बहार रख. Yeah, I think that's very wholesome answer. And on an ending note, I would want कि आप कोई ऐसा message जो देना चाहें हमारे young individuals को who are starting off their careers या entrepreneurs बनना चाहते हैं, उनके लिए एक message. Keep dreaming. People और youngsters जो dream नहीं करते, वो मेरा ख्याल है वो कहीं नहीं पहुंचते. Dream and then give timelines to your dream. Okay. Just dreaming means nothing. So keep dreaming and keep giving timelines to yourself. It will happen. Well, I think that is a great advice, that just dreaming is not sufficient. You need to have a mental plan or a mapping that will eventually lead you to that. That leads you to the destination. So dream karte rahenge to yes, you'll be happy by dreaming, but you will never achieve anything. Sahi. Thank you so much. Pleasure. It was a very wholesome, a very insightful conversation, and you took so much time out for us. आपने अपने experiences share किए. We are very grateful. I'm thankful to your channel, and you guys are doing great job. And I think आप एक अपने मुल्क के लिए बहुत खिदमत कर रहे हैं. पाकिस्तान का वो व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि शायद आज से पहले कोई और चैनल नहीं हुआ. बिल्कुल. और ये again doing something very different from the rest of the media. So good luck to your channel as well. And thank you for coming and taking this interview or discussion. Thank you. So this was a conversation with Mian Nabeel Ashraf, जिससे हमें पता चला about all the ins and outs of the aviation industry and how great things are in pipeline for the airline industry as well. For more such conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.